Hmm. Lavasna, I'm having a wonderful time. एक महीने का अगले प्लान है कि नहीं पौड़ी नहीं करनी है। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत घोल के पी ली थी। सो एनवायरमेंट आई डिड माय स्टैटिक फ्रॉम शंकर आयस, उसको भी मैं घोल वो मतलब घोल को पी गई थी। एंड आई शाउटेड कि मम्मी हो गया, दिस इज दैट्स व्हाट आई सेड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत घोल के पी ली थी। That was my only strategy for polity because polity and geography were the two subjects जिसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगता था because polity was मतलब it was humongous। लक्ष्मीकांत आप जितनी बार भी पढ़ो, पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ो, लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ो, गवर्नर वाला पढ़ो, इट वाज लाइक कि हमेशा ही ऑल दोस अथॉरिटीज, किसका क्या चेयरपर्सन है, किसके कमेटी में क्या, एंड पता उससे क्वेश्चंस आते हैं एंड मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग। तो मैंने लक्ष्मीकांत मैंने आई डोंट इवन रिमेम्बर द काउंट कितनी बार मैंने उसको रिवाइज करा था। लक्ष्मीकांत को मैं जैसे मैंने बोला घोल के पी गई थी। तो आप समझ जाइए मैंने बहुत, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ गया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के दे और मैं कर लूं, तब तक मैं लक्ष्मीकांत पढ़ते गई थी। दैट वाज माय ओनली स्ट्रेटजी फॉर पॉलिटिक्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई हैड रेड स्पेक्ट्रम, अपनी जो ग्रीन वाली छोटी वाली बुक होती है। आई हैड मेड सेलेक्टिव नोट्स फ्रॉम इट और थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री इसी से ज्यादा आते हैं। खैर हमारे टाइम पे तो मिडिवियल से भी आए थे, बट मोस्टली मोर इम्पोर्टेंट इज मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन वाला कल्चर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए थे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम इज लाइक योर बाइबल। मैंने उससे सेलेक्टिव नोट्स बनाए थे एंड थोड़ा उस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई ऑल्सो रेड बिपिन चंद्र ऑल्सो, और उससे भी मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे। हाँ थोड़ा सा, बिकॉज इट्स रिटन इन अ वेरी मतलब थोड़ा लिटरेचर टाइप का वो लिखा हुआ है। तो अगर आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ो ना तो इट विल गेट एम्बेडेड इन योर माइंड कि ऐसे स्टोरी पे स्पेक्ट्रम इज लाइक ऐसा है कि वो बनी है बुक की नोट्स बनाने उससे। इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी। बिपिन चंद्र इज लाइक अ स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसको एम्बेड करने के लिए मैं रात में ऐसी सोने के टाइम I used to read that book, Bipin Chand. मैंने उससे नोट्स नहीं बनाए थे, just to मतलब get things embedded in my mind. I read that book. Current affairs. I made a very clear cut strategy the day I started my preparation, that I'll only read one newspaper, The Hindu, एकदम thoroughly, like I never read two news. लोग कहते हैं कि आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लीजिए, ये सब नहीं। आई ओनली बिकॉज सी यू हैव टू स्टडी फॉर 1 full year, you have to keep your resources limited, so you have to be mindful of that fact in the beginning itself when you are preparing a strategy. So I read one newspaper, The Hindu, thoroughly. Then for additional things I referred Insights IS, daily current affairs. So in my desktop I had made folders topic wise, like for polity, parliament, and I had made folders subject wise. So Insights IS, they used to post this daily current affairs from various sources, from The Hindu also, from Indian Express also, from Down to Earth also. So I used to compile them, I used to like shorten them, summarize the current affairs. And so I went the traditional way. I had made this Word document wherein I used to paste things. So see, for example, अगर किसी स्कीम के बारे में आया है, उज्ज्वल योजना के बारे में, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, सो फॉर एग्जाम्पल अगस्त में कोई न्यूज आई है तो मैंने वो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख दिया। फिर मान लीजिए नवंबर में उसका कुछ अपडेट आया है, दैट दीज मेनी बेनिफिशियरीज वर लेफ्ट आउट और द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द बजट, सो आई यूज्ड टू लाइक ऐड ऑन इट। तो ऐसे और लाइक आई यूज्ड मेनी एक्सेल शीट्स आल्सो, लाइक यू हैव मेनी कमिटीज। मैंने इतना ही करा था। Some people are comfortable reading the compilations at the end of the month. I know I am not that, I cannot read one full 200 pages ka compilation at the end of the month. I'll feel burdened. So I used to do it daily. I had made a timetable that in the morning I'll read my newspaper and get done with it. Then in the evening, because in the evening only they used to post, no, because us din ka pura. And in the evening I'll like
do the current affairs from the inside. And this I did for 1 full year. People say ना कि पिछले साल से भी आ जाता है. No, it's not like that. I think आप एक, क्योंकि देखिए schemes जो होती हैं, जो भी government की current affairs में mostly focus, अगर major part schemes का ही होता है, schemes का टाइम क्या होता है, 5 साल. कोई 1 साल की तो स्कीम होती नहीं है, 5 साल की होती है, 2 साल की होती है. तो अगर कोई पिछले साल का भी न्यूज है तो वो इस साल भी आएगा ही स्कीम के रिलेटेड. सो ऐसा नहीं है. डू इट फॉर 1 full year, that's more than enough, and keep revising. See, revision is the key, because, and like I said, I used to revise every weekend. जो भी मैंने पिछले वीक में करा है, I used to revise it every weekend. तो वो reinforce होती रहती थी चीजें. तो वैसे. So art and culture में even I followed Nitin Singhania only, and I made selective notes from it. Because Nitin Singhania, when you will read Nitin Singhania, there are many redundant things in that, and it's a very bulky book with too many pictures that anybody will get intimidated by that, na? Right. So I made very selective notes for that. Like I had only made, I think, 9-10 pages ke note from that whole book, because see, looking at the previous questions in 2019, it happened that many questions came from art and culture. You have to devote a lot of time on art and culture to get hold of things. See, because especially for science students, because हम लोगों ने art and culture इतना कभी पढ़ाई नहीं होता, तो कोई foundation, तो it's like कि ये क्या है, ये स्तूपा, ये वो, तो it gets you need to devote a lot, but इतने questions आते नहीं है उससे. तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ना, कि आप इतना इनपुट दे रहे हो, आउटपुट उतना नहीं आता है. बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यू शुडंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली. तो 2019 में इट हैपेंड दैट काफी क्वेश्चंस आ गए थे उससे, आर्ट एंड कल्चर से. तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था. नितिन सिंघानिया से मैंने सिलेक्टेड नोट्स बनाए हैं. आप सिलेबस अपने पास रखिए, जो भी यूपीएससी उसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. एंड मेक श्योर that every word written in that syllabus is checked. It's checked. तो मैंने बस वही किया. I only did नितिन सिंघानिया. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी करी थी. मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे. तो आफ्टर गोइंग थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आई रियलाइज दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड from the syllabus. Like in the syllabus you have science and technology, so nanotechnology and everything. So I read the theory about all those things. I did not prefer I did not refer to any book for science and technology. I like randomly searched on Google nanotechnology plus UPSC, and whatever good sources I got, I just made short notes on that. And this plus the current affairs. Science and technology current affairs is very, very, very important. I think mostly like 90% of the questions which come from science and technology are from current affairs. That is what I realized from the past questions. So I followed that. I think it worked. Like in our time, there were questions about virtual reality, augmented reality. So they were in news. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जस्ट मेक श्योर जो भी आपका सिलेबस में है, द टेक्नोलॉजी, वेरियस टेक्नोलॉजी, नैनो और जो भी है, दे आर चेक्ड. एंड करंट अफेयर्स. Oh, environment again. The standard book, I think Shankar IS. And it's important. Like environment, they ask static question directly. They ask like trophic levels, and I still remember. And current affairs. Current affairs are, for environment, science and technology, current affairs are really important because they ask questions relating current affairs and theory. That is what I realized seeing the past papers. So environment, I did my static from Shankar IS. उसको भी मैं कॉपी गई थी. Shankar IS भी, Shankar IS. And current affairs, तो for environment and science technology, current affairs are very important. और आएंगे तो उसी से आएंगे और वो theory से relate करेंगे. So I joined 2 mock tests. One was from Vision and second was from Insights IS. Right. So what I realized that Vision was good if you want to cover your static part. Right. Current affair questions are also good, but but Insights IS के current affair questions are really good. The analysis is very important. Your mock tests are of no use if you are not analyzing. Exactly. Because if you don't analyze, you cannot change your strategy or tune your strategy.
So analysis is very important because उसमें actually बहुत I think vision insights का analysis भी बहुत अच्छी, like this way you have to eliminate the option thing, and UPSC doesn't expect you to know everything. You need to be smart when it comes to attempting questions. So the process of elimination, Right. like you can eliminate two options, then make an intelligent guess and click the correct answer. So all these things ये आपको mock test से ही आएंगे, and time management also. You need to learn time management also, and that you learn from mock test. 6 weeks before the prelims, I started revising my mock test. I did not give any additional mock test. I only revised my mock test, whatever I had done in November and October, just the revision and my notes and all. Don't feel demotivated if you get less marks, because I have seen, like, my friends also, they used to feel demotivated कि इतने कम marks आ गए, and then in that demotivation they skipped analyzing their mock test. They were so disappointed. नहीं करते कि यार इतने गंदे आ गए, क्या करूंगा, I cannot, मैं दोबारा नहीं देना है, ये नहीं देना है. But don't feel that it's not the actual examination, right? And similarly, if you are getting good marks, don't feel overconfident. I know many of my friends who did not give any mock test, and still they got selected. They are into services. So ऐसे भी cases होते हैं. Right. So you shouldn't feel demotivated by less marks, and you shouldn't feel overconfident by good marks. Treat it like a lesson. कि ठीक है, टेस्ट में जो भी मार्क्स आ गए ओके है, जो भी है आई नीड टू एनालाइज. डोंट फील डीमोटिवेटेड कि कम मार्क्स आए हैं या ज्यादा आए हैं. वो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे एवरी ट्रिक, एवरी टेक्निक, योर मार्क्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव. Last के 4 में it was all about revision for me, because आप इतना, it is like humongous, the syllabus is humongous, you cannot remember, you need to revise, otherwise क्योंकि see वहाँ पे you don't have time, you just have one minute for each question. ठीक है? So you need to, the moment you see the questions, the concept should start cropping up in your mind. So your revision should be that strong. I only focused on revision. Revision is the key to this exam, because as I said earlier also, the theory of reinforcement. If you read the same thing again and again, it is bound to get embedded in your mind. And that is what we need. So I only focused on revision. I revised all my theory part, all my books, all my notes, with the, from prelims point of view, not the mains point of view. All my current affairs, which I had compiled digitally, all my current affairs, and all my mock tests. I did not give any additional mock tests. I only revised what I had given previously. That's it. Revision is the key. आप जब, unless you are confident कि इसमें से कोई भी question उठा के दें और मैं कर लूं, तब तक आप रिवाइज करते रहिए. So it depends. And with every, see, it's not like if I'm saying I revised this Lakshmikant wala book 3 times, so it doesn't mean that all the 3 times I took the same amount of time. It gradually decreases with each revision. So for the first revision, if you're taking like 2-3 days to revise the entire book, so for the second revision you'll take maybe 1.5 days. The third revision you'll only take 1 day. So it like exponentially decreases. But revision is the key. Like, revise as many times as you want until you are clear with your concepts and you're confident with the concepts. So revision is the key. So keep your last 4 months only for revision, only for revising your revision for your static part, for your mock test, for your current affairs. Give like last 2 tips: revise and don't let yourself feel demotivated at any point of time. ठीक है? Because अगर आप demotivated, do whatever you want to feel like to keep yourself motivated. Stay away from negativity. How to do that? Be selfish. So these are the 2 tips: revise whatever you have done in the past 1 year. Revise all those things and keep yourself motivated. ठीक है? Because see, 4 महीने कोई option नहीं है. You can only feel confident, feel positive. जो भी consequences होंगे उसके बाद में सोचिएगा. But these 4 months, at no point you can afford to feel demotivated, because that takes a lot of, that's like a mental drain kind of. तो आप अपने आप को motivated रखिए. Do whatever, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि motivation is going down, do whatever makes you happy. Order a pizza or watch some good movie, go for shopping for a few hours, or talk to your friends, talk to your family, but remain positive.
for those 4 months. That is very, 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 very important, because if you go to the examination hall with a negative outlook, or feeling drained, or if you haven't slept properly, or you are feeling a little maybe you have had some conversation with a friend, or which was not very positive, all these things you should be like, stay away from all these things. बस वो Exactly. 4 महीने अवे रख लो अपने आप को, उसके बाद जो करना है करना. बी सेल्फिश, लाइक आई सेड, बी अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज वही 4 महीने हैं जिसमें आप बस वो 4 महीने आप बस अपने लिए रखिए. फील मोटिवेटेड, रिवाइज एवरीथिंग until you feel confident with everything you have read. So these are the last 2 tips I would like to give. The results would be out by evening, and that was like it was confirmed by credible sources. So I was like, okay, शाम तक का टाइम है, तब तक थोड़ी सांस ले लेते हैं. So I was watching this biryani का video, like what is the difference between Lucknowi biryani and Hyderabad. So I was watching that. खिलाएंगे आपको भी. I was watching that video, and suddenly that notification came, results out. So results out, I opened that PDF. So that time my mother was entering. So my room is near the main gate of our house. So my mom was entering through the main gate, and I like, so I did not do control F. I was like, नहीं, ये मैं सह नहीं पाऊंगी अगर नाम नहीं. So I preferred scrolling the pages. So मैंने scroll किया. I think 4th or 5th page में my name was there, and I shouted कि मम्मी हो गया. That's what I said, and I started crying, and my mom also started crying. Or it was a very, I think that will always remain with me for life. That one moment where I was crying, my mother, and we hugged each other, and then my so I like it was like a big thing for me. जिसके लिए आपने इतना prepare किया, emotional था काफी. बट उसके बाद पिज्जा विज़ा ऑर्डर किया मस्ती के लिए. डोमिनोज से मंगाया था, मतलब तब लॉकडाउन चल रहा था ना. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ऑर्डर्ड समथिंग लॉकडाउन के बाद. सस्ती मस्ती. हाँ, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल.